I just revise it. These are the curves we have first. This is one curve, this is second curve, this is third curve, this is fourth curve. And on these curves, curve is simply collection of point on two-dimensional plane, I told you. Then if I say on this curve or on this curve, if any 2 point I'll take and join with a line segment, and if this line segment completely remain on curve again, we will say it will be a straight line, otherwise no. Here what you will find, these 2 points if you join on the curve, what you will find, this point and this point remain on the curve, but all the other point gone out of it. That means this cannot be a curve. It will called as a curve. This will be called as a curve. This will be also called as a curve, but not a straight line. Here what you will find, any 2 point if I take and join with a line segment, this line segment completely remain on this curve, we will say this curve will be a straight line. ये जो curve आएगा, this is called straight line. तो कोई भी definition आपसे पूछ सकता है, तो we should say it is a special type of curve on which if you take any 2 point, join with a line segment, that line segment have infinite many point and all points should be on the curve again. If it is, we will say it will be a straight line curve. Now one more thing you have done last year in 10th class, that straight line always represent by linear equation. If you remember, this is the equation we used to have for a straight line. Linear equation always give you a straight line. आपने इसमें x और y की value put की थी and on the graph you have plotted it every time you got the straight line. So we will say, keep in mind, whenever linear equation we have in x and y, it always give you a straight line. ये काम हमने पहले किया है. पहली चीज मैंने डेफिनेशन बताई है. सेकंड थिंग आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू हैव अ लीनियर इक्वेशन in x and y, you will be called that as a straight lines equation. So equation of straight line means, what is the meaning of equation? Equation means this will give you all infinite points present on the line. X you give, y you will get. So that way you can just join it and you can plot a graph for it. Now coming on, first thing which we will take in the straight line that we should remember now, slope or gradient of a line. Slope, or it is called gradient of a line. Slope or gradient of a line. Now what is the meaning of slope or gradient of a line that you should keep in mind? This is x-axis and y-axis we have. This is origin. Any line if I take, for example, I take this line. This line cut the x-axis at some place. Let this is the point where it cut x-axis. Wherever this line cut x-axis, wherever this line cut x-axis, from that point, if I take right side, it will be called positive x. ये वाला part आपका क्या कहलाएगा? Negative x. जहां ये कट कर जाएगी उसका इधर वाला पार्ट कहलाएगा रिलेटिव पॉजिटिव, इधर वाला कहलाएगा रिलेटिव नेगेटिव. इस रिलेटिव पॉजिटिव पार्ट पे अगर आपने ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, व्हाट यू शुड डू, वेयरएवर इट विल इंटरसेक्ट, that will decide. ये पॉजिटिव, रिलेटिवली पॉजिटिव कहा जाएगा. ये सारी वैल्यूज इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव मानी जाती है. ये जरूरी नहीं है कि यहीं से पास हो, हम इसको रिलेटिव पॉजिटिव मानते हैं. पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं मैं, रिलेटिव पोजीशन मींस इनके कंपैरिजन में ये सारे पॉजिटिव कहलाएंगे. सो व्हेन यू हैव दिस रिलेटिवली पोजीशन पार्ट, देन इफ यू टेक रिलेटिव पॉजिटिव एक्सिस, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज पे टर्न करना है and go towards line, then whatever this angle comes we call that as theta. Anti-clockwise direction, from positive x-axis we go in anti-clockwise direction, then whatever angle it will make with positive x-axis, जितना भी ये positive x-axis से angle बना रहा है in anti-clockwise direction, ये anti-clockwise है, इधर जाओगे तो clockwise है, तो
always we take the angle in anti-clockwise direction. Then whatever Sir, this angle comes, yes. sir, if you are saying that for this part of x-axis will be positive, sir, if there is -1 this side, so यहाँ -1 है, इधर देखो, ये -1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका -2 आएगा, ये -3। इनके कंपैरिजन में हम इसको पॉजिटिव साइड बोलेंगे कि नहीं? -2 -3 आर मोर नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली साइड है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, ठीक है। यस, ओके सर। ये रिलेटिवली पॉजिटिव है, इनके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली पॉजिटिव एंगल। So whenever it is a relative, so I am saying it's a relative x-axis, or we'll say relative positive side of x-axis, and that makes certain angle with this line in anti-clockwise direction. ये आपका एंगल बन गया। इस एंगल का अगर आपने tan थीटा ले लिया, you take the angle tan theta here, जो ये एंगल बना रहा है इसका आप टेंजेंट ले लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो आपका एंगल आएगा tan थीटा, दिस इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट ऑफ द एंगल which the line makes with positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope of the line, denoted by m, or it is called tan theta. Write down the definition please. The trigonometric tangent, यही तो एंगल थीटा, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको लाइन तक जाना है। कहाँ तक? ये मतलब ये तो सब सेम ही होंगे एंगल, आप कहीं से भी ले लो, ये एंगल ले लो तो भी ठीक है, ये एंगल ले लो तो भी ठीक है, द एंगल रिमेन सेम। आर्क आप बढ़ाते जा रहे हो तो आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, बट द एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द सर्कल विल बिकम बिगर, रेडियस बढ़ती जा रही है। So write down the trigonometrical tangent of the angle that a line makes with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is called slope or gradient of a line, is called slope or gradient of a line. It is also called as slope or gradient of a line. Now, one more thing you should note here. If you have the line like this, if you have line like this, if you have line like this, then what will be the slope of this line? If you want to take the slope of this line, then this is the point. It is the positive x-axis we call. यहाँ से आपको ये एंगल लेना है, then this angle is theta, इसका आप tan theta ले लो, ये आपका slope आ गया. Let it be denoted by m1, first line slope. हाँ जी, जो भी एंगल आ रहा है उसका टेंजेंट, जैसे 30 डिग्री एंगल बना रही है तो tan 30 will be the slope. If 45 डिग्री एंगल बना रही है तो tan 45 is the slope. That you should keep in mind. अगर ये लाइन हम लेके चल रहे हैं तो ये यहाँ कट हुआ, ये वाला पार्ट रिलेटिव पॉजिटिव, ये रिलेटिव नेगेटिव, तो ये एंगल हमारा आ गया थीटा. Then I'll take tan theta of this. ये इस लाइन का स्लोप हो गया. थर्ड, अगर ये वाली लाइन लें तो अब हमारा ये वाला पॉजिटिव, वो पार्ट नेगेटिव, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ये एंगल हमको देखना पड़ेगा. And then it is theta, and then its tan theta will be the slope. So here one thing you should keep in mind, that the angle which you have
कैन गो बिटवीन 0 एंड 180। कोई भी लाइन आपके पास है, अगर आप पूरी रोटेट भी कर दोगे तो वो एंगल आपका 0 से 180 के बीच में रहेगा। कैसे रहेगा वो भी चेक कर लो। By the way, you have the line like this. Okay? Now just check here. First the line is like this. Then what I should say in this case, the x-axis and this line are making angle 0. स्लोप क्या होगा? tan 0। अब मैंने इस लाइन को रोटेट किया, ये एंगल अब आपका एक्यूट एंगल हो गया। देख लो ये एंगल आएगा आपका, ये एंगल एक्यूट होगा। यहां आके ये एंगल कितना हो गया? 90, राइट। और रोटेट करते हैं इसको। अब एंगल कैसा बना? ऑब्ट्यूस। और ये कहां पहुंचा? 180 डिग्री। तो आप 180 कहोगे या 0 कहोगे, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कभी लाइन आप लेते हैं तो उसपे एरो दोनों साइड लगता है, कोई भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं काउंट होता है। इसका मतलब केवल ये हुआ कि ये लाइन है आपकी, ये 0 डिग्री काउंट करो तो 180 मत करना, 180 करो तो 0 नहीं करना, क्योंकि tan थीटा अगर आप निकाल रहे हैं tan 0 भी 0 होता है, tan 180 भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये थीटा कहां से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ 0 से। ये 0 से स्टार्ट हुआ 90, 180 और वापस घूम के ये कहां पहुंच गया? देख लो यहां तक आया तो कितना है? ये भी 90 से बड़ा है। अब ये 130, 140, 150, 160, 170 और ये 180 का हो या 0 कह दो, ये इधर आएगा। लाइन का ये वाला एंगल तो यही देखा जाएगा, एंगल यही वाला है, ये लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड कर गई तो एंगल 0 रहेगा। 180 का हो या 0 का हो, तो जब भी आप 0 को काउंट करेंगे 180 नहीं लेना है, 180 लोगे तो 0 नहीं करना है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि थीटा हमारा चल रहा है 0 से 180 के बीच। अगर आपने 0 को इंक्लूड किया है तो मैं 180 को नहीं ले रहा। बिल्कुल हो जाएगा। थीटा इज बिटवीन 0 एंड 180। इसका मतलब tan थीटा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। One thing is clear here, theta we have between 0 and 180. सर अगर अपन 0 से 0 नहीं ले सकते ना? 0 से 0 का क्या मतलब हुआ, जरा बताओगे? सर 0 सर मतलब 0 से 180 हो गया, 0 एक तरह से तो अपन ले तो 0 180 हो गया। तभी तो मैंने कहा 180 इंक्लूड नहीं किया मैंने। 179, 179.5, 179.7 यहां तक पहुंच जाओगे। जैसे ही 180 वाली सिचुएशन आएगी उसको वापस 0 में इंक्लूड कर लिया आपने। तो आपने किसको इंक्लूड किया? 0 को इंक्लूड किया, 180 को नहीं किया, इसलिए आप 180 काउंट नहीं कर रहे हैं। ड्रोन से 180 पे 0 हो गया, आप कह रहे हैं उसको या तो 180 करो, अगर ये करते हो तो ये कर लो, मुझे परेशानी नहीं है, दोनों केसेस सेम है। 0 को इंक्लूड नहीं करो तो 180 को करो, 180 को नहीं करो। तो थीटा ऑलवेज कम्स आउट टू बी बिटवीन 0 एंड 180। और अगर ये हुआ तो आपका tan थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा भाई? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। और tan थीटा अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है, इसका मतलब tan थीटा बताया था यहाँ प्लस होता है, यहाँ ये माइनस होता है। इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, tan थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, और tan थीटा 0 भी हो सकता है। tan 0 is 0 only. तो tan theta can be positive, tan theta can be negative, tan theta can be 0. इसका मतलब हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्लोप हमारा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, स्लोप हमारा लेस देन 0 भी हो सकता है, और इट कैन बी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा कहां से कहां तक जाएगा? थीटा जाएगा हमारा 0 से 180 के बीच में। थीटा ऑलवेज कम बिटवीन 0 and 180. But where tan theta will be, we will say tan theta can be a positive value, can be a negative value, can be 0. So we should say tan theta, that is the slope, come out to be greater than 0, can be less than 0, can be equal to 0.
बिल्कुल लाइन सेगमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाइन लोगे, अच्छा सर, ये आया आपने थर्ड क्वाड्रेंट, ये लो, यही बना रहे हो, ये लो। एंगल कहां से लोगे, एंगल जहां कटेगा वहां से एक्स एक्सिस देखनी है, तो एंगल तो यही आएगा, इधर से क्या लेना देना हमको। और कैसे बनाऊंगा, कहां से, नीचे से नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज चला जाएगा। आई टोल्ड यू एंटी क्लॉकवाइज एंगल जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज नहीं जाना है। क्लॉकवाइज जाओगे तो फिर एंगल आपका 180 में से माइनस करना पड़ेगा। यस बोलो, कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर से लाइन सेगमेंट बनाइए, जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम बनाई थी सर। अगर आप एकदम ऊपर से लाइन सेगमेंट बनाएंगे जैसे फर्स्ट डायग्राम में बनाई थी। बोलो कहां से बनाओ, यहां से सर? हाँ सर, यहाँ से बना लीजिए। ये लो, अब ये इस तरफ नहीं सर, उस क्वाड्रेंट में जानी चाहिए लाइन, इसमें, ये लो, और बोलो, और कैसे बनाओ। हाँ अब सर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे बस ये सर, लो। इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। देखो जहां लाइन कट होगी उसका राइट साइड आप पॉजिटिव काउंट करेंगे, राइट। जहां भी लाइन कट कर रही है उसका राइट साइड आप पॉजिटिव काउंट करो, और जो भी पॉजिटिव पार्ट आ रहा है वहां से आप स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। ऐसे ही हम इसको देखें, ये कहां कट कर गया, यहां कट कर गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपको यहां से स्टार्ट करना है और इधर जाना है। अब इस लाइन से यहां से स्टार्ट करना है, ये आपका पॉइंट है इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हुआ, आप कहीं भी यहां से लेके ये एंगल लो, और बोलो। ओके सर। क्या ये 180 से ज्यादा जाएगा? नो सर। क्या ये एंगल 180 से ज्यादा जा सकता है? अगर ये लाइन घूम गई तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगी। So the angle come out to be between 0 and 180, we will say, and tan theta will be positive or negative or 0. So tan theta means the slope of the curve can be 0, can be greater than 0, can be less than 0. That you should keep in mind. One more thing now, note here, what is the slope of x-axis? X-axis itself is a line. X-axis खुद एक line है. What should be the slope of this line? x-axis से कितना एंगल बनाएगा? Yes, please. ये itself is a line. ये आपकी लाइन आ रही है. How much angle it makes with x-axis? It's 0. So we will say theta in this case is coming 0. और slope theta 0 आने का मतलब tan theta is coming 0, or I should say slope is coming 0. So x-axis लाइन कभी भी होगी, x-axis का slope हमेशा आपका 0 होगा. What will be the slope of y-axis? ये y-axis है. y-axis ये है, यहाँ कट कर रही है, तो ये पॉजिटिव साइड हुआ, ये एंगल हम नोट करेंगे, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आए. एंड अगर ये 90 डिग्री आया तो इसका स्लोप बना m is 1090. 1090 is infinity, you have done. So that means the slope come out to be infinity. Y-axis का slope infinity आएगा, which you can write 1/0. इसको आप 1/0 भी बोल सकते हैं. तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस को याद रखना है हमेशा. कभी भी स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात होगी तो इन्फिनिटी होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात होगी तो स्लोप 0. Now write questions please on the slope, and I want that you should make the diagram also and then write down the slope which I am asking. Question says find the slope of the line
whose inclination with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is 60 degree. So whose inclination? 60 degree. Inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense or anti-clockwise direction is 60 degree. मुझे इसका डायग्राम भी चाहिए. The line is making angle 60 degree with positive x-axis. That is the question we have. We should find out the slope. तो ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है. आप कहें नहीं हम तो ऐसे बनाएंगे, वो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कहें तीसरा आदमी कहे हम तो यहाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ भी बन सकती है ये लाइन, यहाँ ये ओरिजिन से भी निकल के आ सकती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. हमें अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द पॉइंट, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं. But all these lines will be parallel to each other, right? And in this case, this angle is 60 degree given. This is also 60. You take this is also 60. This is also 60. This is also. And in that case, what does slope come out to be? Slope come out to be tan 60. And tan 60 is what? It's root 3. So slope comes out to be root 3 here. Second question, please. Again, find out the slope of line which makes an angle 120 degree with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense makes an angle of 120 degree with the positive direction of x-axis. Please write down what is the slope here, and diagram should be clear in your mind. Minus. Yes, what should be the answer? बोलो भाई, आंसर बोलो. The line is making 120 degree with positive x-axis in anti-clockwise sense. तो लाइन ये चलेगी. ओरिजिन से निकालना कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है आपको, आप कैसे भी लाइन बना सकते हैं, बट द एंगल शुड बी 120. ये एंगल आपका 120. All will be parallel to each other, right? That means what is the slope this time? It will come out to be tan 120 degree. And 120 means what I should write? This will be 90 plus 30. यही करेंगे? 90 plus 30. Yes, you can do that also. 10 90 plus 30. Second quadrant में 10 क्या होगा? Minus. And 10 will change to cot 30. What is cot 30 result? Minus of.
So I got the slope as minus root 3. Next one, when the line makes an angle 150 degree with x-axis, please find out the slope. Yes, anti-clockwise direction from positive x-axis. ये 120 की जगह अपनी बार 150 हो गया. Find out the slope, please. So it will come 90 plus 60 minus cot 60 minus 1 by root 3. So the slope of the line comes out to be minus 1 by root 3. So this is the one way you can get the slope of the line when angle with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is given to us. अगर एंगल आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मालूम है तो tan थीटा कर लेना है उस एंगल का, you will get the slope. By the way, the angle is not known, then how you calculate the slope of the line, that is the second thing we should know. But for that, when they say you find out the slope of line, in that case they will be giving now 2 points on the line. This is one line we have. We want what is the slope of this line. For that, now they are giving two informations. One is the point A and another is the point B. And its coordinate we'll take, it will be x1, y1, and this coordinate we'll take as x2, y2. 2 points are given on the line, and now they are asking what is the slope of this line. अब की बार आपसे स्लोप पूछा जा रहा है, जबकि आपको एंगल नहीं मालूम, एंगल आपको खुद निकालना है और tan थीटा निकालना है. So for that, what we do here, I draw a perpendicular on this side, perpendicular on this side. When you do this, what this length, this is origin. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? Is it the x coordinate? This is x1. From here to here, what this length will be? x2. Right? Same way if I draw here, this length will be what? y1. And I draw the perpendicular here again. This length will be y2. Now I do one thing, I take a triangle from here. I draw a perpendicular from A to this line. This is A, B, and this is P. This angle is 90. Now, as you want the slope of the line means you need this angle first. यही एंगल चाहिए आपको. ये लाइन है यहाँ कट कर रही है तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, आपका ये एंगल थीटा हो गया. ये अगर थीटा है तो इज इट ऑल्सो थीटा? दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. What this part comes out to be, can you tell? Is it x2 minus x1? ये वाला पार्ट क्या है? टोटल यहाँ से x2 और ये माइनस x1. यहाँ से ये लेंथ कितनी है? y2. इसमें से ये पार्ट है y1. So we will say it will be y2 minus y2. And if you have this triangle, if you have this triangle, then can you get tan theta now? इस ट्राइंगल में आप tan theta निकाल सकते हैं. tan theta क्या होता है? Perpendicular by base. So I should say tan theta I calculate now. What it will come? y2 minus y1 by x2 minus x1. So if you have the coordinates, then also you can calculate the slope. Formula came as tan theta is y2 minus y1 by x2 minus x1. तो या तो आप हमें एंगल दे दो, एंगल नहीं देते हो तो 2 पॉइंट दे दो लाइन पे. अगर 2 पॉइंट मिल गए तो भी हम स्लोप निकाल पाएंगे. एंड इफ यू हैव द एंगल आल्सो आई कैन गेट द स्लोप. सो दिस इज द स्लोप वी हैव.
So m is simply coming tan theta, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. That will be the slope we have of this one. Okay, करना क्या है, y2 minus y1 दोनों y coordinate का difference by the x coordinate difference, that will give you slope here. तब हमको थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हम slope calculate करें. Now write one question on it, please. Find the slope of a line. Find the slope of a line passing through point 3, 2 and minus 1, 5. Find the slope of the line passing through 3, 2 and minus 1, 5. दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है. Any point you can take as x1 y1, any point you can take x2 y2, that is your choice. इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगर आपने इसको x1 y1 लिया है तो ये आपका x2 y2 है. x1 is 3, y1 is 2, x2 is minus 1, y2 is 5. So what should be tan theta this time? y2 क्या है आपका 5 माइनस y1 कितना है 2 divided by x2, it's minus 1 minus 3. 5 minus 2 will be 3 here and denominator is minus 4. So what is the slope we have now? Tan theta is coming minus 3 by 4 is the slope of this. One more question, write down please. Find the slope of the line passing through point minus 1 minus 5 minus 2 plus 5. Find out the slope of this line, please. Sir, How much? minus 10. Minus 10. ठीक है, tan theta y2 will be 5 minus y1 minus 5 by minus 2 minus 1. What the numerator comes? 10. This will be minus of 1 only. So slope come out to be minus. So slope of the line will be minus 10. Clear? So if 2 points are known, clearly I can get the slope of the line. What that will be? y2 minus y1 by x2 minus x1. अगर इसको x1 y1 लिया है तो इसको x2 y2 लोगे.